Welcome students. Welcome to the lecture number 6 of chapter 3, that is conditional and looping constructs. In the previous chapter we have discussed about some questions related to the relational operator as well as the logical operator. Okay, so let's discuss some more operators. Now the first operator that we are going to discuss in today's class is basically the assignment operator. We have already discussed this earlier that for assigning a particular value to a variable we use this equal to operator, like this a is equal to 5. In this way the 5 value get assigned to the variable a. Okay, and over here the next operator is plus equal to. So if we want to write like this, just wait, so if we want to write like this, that a is equal to a plus 5, alright. So in this case we can write it like this, that is a plus equal to 5. So basically these both are equivalent statement. Okay, so in order to write this statement, assignment operators provides us a shortcut way for writing the statement of these kinds. Like in spite of writing the a 2 times, I will write 1, and then this a plus equal to operator will do the same work as performed by this expression. Similarly, if we want to write a is equal to a minus 4, so you can use this assignment operator, that is minus equal to write these kind of expression. Okay, so there is a multiply equal to, divide equal to, floor division equal to, modulus equal to, exponential equal to. So you can use all these kind of operators as per the requirement in the statement. Okay. Now the next one is the membership operator. We have already discussed the membership operator in our previous lectures. Okay, so there are two operators, membership operator. One is the in operator and other one is the not in operator. So what is the purpose of the in operator? It gives true if the specified data is present in the given sequence, dictionary, otherwise give false. So let me show you once again what is the meaning of this. So for that, first of all I have to open my Python interface. Okay, so suppose if I entered, suppose ch is equal to k, right? Oh sorry, ch is equal to, I have taken character k. Okay, so if I want to check that if ch in, if I have written like Komal, so it will give me either answer in true or false. So now you can see that I am getting the answer as true. Why? Because the ch variable contains the character k, and the k character is present in this word. Yes, the first character is k itself. Okay, so if this data is present in this data, okay, then it will give us the answer as true, right? So it gives true if the specified data, that is the data which is present in the ch variable in our example. Okay, so it gives true if the specified data is present in the given sequence, dictionary, otherwise give false. So basically sequence, dictionary is this. Basically I have given a sequence of, I have given a string that is Komal, right? So it checks whether the data which is present in ch variable is, that data is present in the given string or not. If that data is present, then it will give us the true answer, otherwise it gives a false answer. Similarly, the next operator is the not in operator. So it gives true if the specified data is not present. Okay, if it is not present in the given sequence, then it gives true, and if it is present in the sequence, then it gives false. So let me also check this. If ch not in the word Komal, so it will give me the answer false. Why? Because ch is present, the data which is present in ch, that is k, is present in this word. Okay, so that's why the answer for not in is false, because the data present in ch is present in the word Komal, no? So obviously it's false, right? So how can we use this kind of things in our programs also? Let me show you a program for it. You remember that we have done a program in which we checks whether the given character is a vowel or a consonant, right? So let me open that program first.
So we have done many programs. I think that program is the 7th number. Yes, now this is the program. Okay, so in this program we write the code of checking whether the given character is vowel or consonant, right? So now over here you can see that we have to write this condition that ch is equal to a or ch is equal to e, I, o, u. We have to write such a long condition for it, and also first we have to convert that data into small case so that only small letters can be checked, right? So now if I use the in operator in this case, then how in operator is helpful for me? So let's use the in operator. Okay, so if ch in a, e, I, o, u, and I write the capital one also a, e, I, o, u, right? So if the value of ch belongs to this string, it means the value of ch is equivalent to any one of the character of this string, then it gives the answer as true, and you will get the answer as it is a vowel. So let us check this question also. F5. So now it is asking me to enter the alphabet. So suppose I enter some vowel. Okay, so I entered an variable I, character I. So now you can see that it is giving me the answer as vowel. Okay, so small letters it is satisfying. So let me enter some capital letter in ch. Let me enter this capital E in ch. Okay, and then we will see what will be the result. So when it asks me about the alphabet, I enter the capital E. So you can see that in this case also it is giving me the answer as it is a vowel, right? But suppose if I enter any other character than that, so let me enter the any other alphabet. Suppose I entered the P. So P is not a vowel. Okay, so that's why in this case it is giving me a consonant. So it means it will give me the answer that it is a vowel only if and only if the data or character which is present in this variable ch belongs to this string. Okay, if the value, the character present in the ch belongs to any one of the character, okay, is equivalent to any one of the character of this string, then it gives me answer as true. So now you can see that with the help of this in operator we shorten the long expression, long conditional statement, right? So this is the benefit of using the in. So if you want, you can also note down this point in case of the in operator question. So let's so we have covered this membership operators also. So we have seen the programs related to all kind of operators. Now the next topic that we are going to do is basically loops. Okay, so let me first tell you that what is the benefit of using a loop. Okay, so for that I'm going to write a program first. Okay, so let me close this one and open a new file for me. Okay, so let's write a code for checking whether the given number entered by the user, that is even or odd. Okay, so we have to write the code for it. So num is equal to int input, then we will simply write enter the number. Okay, now after taking the number from the user, we will check whether if the number mod 2 is equivalent to 0. If that is true, then we will simply write the message that it is an even number. Okay, and else if that condition is not true, then we will write that print it is an odd number. Okay, so we have written the program for finding the for checking whether the given number is even or odd, right? So let me first run it also. So I have to first save this program. So I have given the name as program number 9. Okay, so now it asks me about the number. Suppose you have given the number as 56, then it shows me that is an even number. Okay, so up to this part our question is complete. Now suppose
if the requirement is that, let me write the question also over at the top, and in a comment that write a program to check whether given number is odd or even. Okay, so my question is this, whether the given number is odd or even. Okay, so I have written the code for it. Now if suppose there is a little bit change, that write a program to check two numbers whether given number is odd or even. So it means we have to check two different numbers, that whether they are odd or even. So how we are going to check two numbers, because this code will only entertain one number, that's it. So how can I check the two numbers? No problem at all. I will simply copy this code and once again paste this code. Okay, so I will do it. So now I again run the code. Okay, first it's asked me a first number, then I entered, suppose I entered 78. It shows me that is an even number. Now it again asking me the second number. Okay, so suppose if I have given 55, so it is giving me an odd number. So if I want to do the same task for two different numbers, so I have to copy the code. And suppose if the person has given me, then okay, write this code for 5 numbers. So how can I do it? So simply I have to copy this code and paste this code 5 times. Okay, so now I have pasted my code 5 times. Okay, so in this way my program, I will done my program. So in this case you can see that my code is pasted 5 times. So obviously in this code it asked me one by one 5 different numbers, and simultaneously it shows me that whether the number is even or odd, right? So now I have copied and pasted it, right? And suppose if someone has given me, okay, write a program to check 500 numbers, that whether they are even or odd. So I said, oh my god, I have to check 500 numbers. So it means I have to copy this coding 500 times. So now it seemed to be very complicated for me. Okay, so let me explain you about the real problem that we are going to face in this case. So now up till you understand that we have to do the same code multiple times, so obviously we can copy and paste that code. But suppose if the number of times is very large, then obviously there is a little bit problem for us also. But now, so we have written the code. Okay, we have written the code one time, then again I have copied the code second time, I have copied the code third time, then fourth time, and then I copied the code fifth time also, right? So till now what I have done, I have copied the code 5 times in my program. Okay, so what will be the problem that I'm going to face? Actually, when my program is completed, so what will you do once your program is completed? You will press this key, that is F5. Okay, once your program is completed, then you will press the key F5 to run your program. Okay, so what are the various steps the Python perform before executing your program? The first thing that Python is going to do is that first it check your code. Obviously, if suppose if there is any syntax error in your code, then you know that when we press the F5 to execute the code, it will show me that error. So obviously the first thing that the program is going to do is basically it is going to check your error, check your code, that if the code is syntax wise correct or not, right? So first it check your code, and after checking your code, then it convert the code into machine code.
right? And once this machine code work is over, then it execute that line. Okay, as you know that in Python we use interpreter. So interpreter executes the code line by line, right? Okay, so the first thing is that when we press F5, first the interpret checks our first line. If that first line is okay, then it convert that line machine code into machine code. Okay, then it converts the statement of that line into the machine code, and once it is converted into the machine code, then it execute that line. Simple. Okay, but you think one thing, that in this case you have copied the same code 5 times. Okay, so suppose if there is no error in your code, then do you think that there is an error in the pasted version of your code? Suppose now this is your code, okay, and there is no error in these 4 lines. So what you have done, आपने इन्हीं 4 लाइंस को ही तो बार बार कॉपी किया है. आपने यही किया है ना कि ये जो 4 लाइंस आपने लिखी हैं, you have copied these 4 lines and you pasted these 4 lines. तो इन केस अगर इन 4 लाइंस में कोई सिंटेक्स वाइज एरर नहीं है, तो ऑब्वियसली आपने जो इसको कॉपी करके नीचे ये 4 टाइम्स और पेस्ट किया है, इन लाइनों में भी तो कोई एरर नहीं होगी यार. बट जब पाइथन का इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट करेगा तो हाउ ही विल डू, वो पहले इस फर्स्ट लाइन को उसने चेक किया. ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना. फर्स्ट लाइन उसने चेक करी, भाई सिंटेक्स वाइज करेक्ट थी, मशीन कोड में कन्वर्ट करी, एग्जीक्यूट कर दी. देन सेकेंड लाइन चेक करी, सही थी, एग्जीक्यूट कर दी. थर्ड लाइन चेक करी, मशीन कोड में कन्वर्ट करी, एग्जीक्यूट करी. फोर्थ लाइन कन्वर्ट एग्जीक्यूट, फिफ्थ लाइन कन्वर्ट एग्जीक्यूट. अच्छा, अब सपोज इन 4 लाइनों में कोई एरर नहीं थी ना, लेकिन जब वो इधर आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, तो फिर दोबारा से इस लाइन को चेक करेगा. He will check this line again that whether there is any syntax error in this line or not. So it is basically एक तरह से waste लग रहा है टाइम इंटरप्रेटर का, because that same line is already checked. But now the interpreter will again check this line, again convert the same line into machine code. अगर आप देखो तो ऊपर भी उसने उस लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट किया हुआ था और फिर एग्जीक्यूट किया था, बट यहां पे भी फिर दोबारा कर रहा है. सो इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि द सिस्टम विल डू द सेम वर्क फॉर द फर्स्ट कोड, सेकेंड कोड, थर्ड कोड, फोर्थ कोड, फिफ्थ कोड. द सिस्टम विल डू द सेम काइंड ऑफ वर्क फॉर ऑल दीज स्टेटमेंट्स. हालांकि ये स्टेटमेंट सेम है, बट सिस्टम उनको बार बार चेक करेगा, कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. अब एक चीज सोचो, सपोज मेरे पास एक नोट्स हैं, ठीक है, मैंने उसी नोट्स की फोटोकॉपी आपको पकड़ा दी. सो इफ देयर इज नो स्पेलिंग मिस्टेक इन माय ओरिजिनल नोट्स, देन हाउ कम द मिस्टेक कम्स इन योर फोटोकॉपीड नोट? ऑब्वियसली उसमें नहीं आएगा. सो अगर सपोज मान लो मैंने अपने ओरिजिनल नोट्स चेक कर लिए, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, सो डू यू थिंक दैट इट इज रिक्वायर्ड कि मैं आप जो फोटोकॉपीड नोट है उसकी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करूं? नहीं भाई, अगर मैंने ओरिजिनल नोट्स चेक कर लिए कि दैट देयर इज नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, और उसी नोट्स की मैंने फोटोकॉपी आपको प्रोवाइड करी है, सो देयर इज नो पॉइंट कि मैं जो फोटोकॉपीड नोट्स हैं उसको भी मैं चेक करूं स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए. ओके, बट यहां क्या हो रहा है, यहां पे इंटरप्रेटर सेम लाइनों को बार बार चेक कर रहा है, सेम लाइनों को बार बार मशीन कोड में कन्वर्ट करा. ऑब्वियसली मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए वो कुछ कैलकुलेशन तो कर ही रहा होगा ना. सो इट इज रिपीटिंग दोज कैलकुलेशंस 5 टाइम्स. तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सिस्टम का टाइम वेस्ट हो रहा है. सिस्टम का टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है. सो हाउ, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट करें? ठीक है, तो हमने देखा था, ठीक है, 4-5 बार अगर हमें इन स्टेटमेंट्स को कॉपी पेस्ट करना है तो इट्स ओके. लेकिन वहीं अगर सपोज मान लो यहां पे काम हमें ज्यादा बार करना पड़ेगा, तो क्या करें हम लोग? यहां पे इन दैट केस हमें कई बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता. चलो एक पर्सन हमने सोच लिया कि चलो 500 टाइम्स बोला, हमने 500 टाइम्स कर भी दिया. मान लो एक बार कॉपी पेस्ट ही करना था, हमने कर भी दिया, लेकिन आप खुद भी देखो ना, उसके बाद भी तो सिस्टम्स के लिए प्रॉब्लम है. बिकॉज
उसको हर एक लाइन को चेक करना पड़ेगा, चाहे वो सेम लाइन पहले चेक कर चुका है लेकिन वो फिर भी बार बार चेक करता रहेगा। अगर सपोज मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई बताओ मुझे 4 + 5 का आंसर क्या होगा, यू विल से 9। एक बार आंसर सुनने के बाद मैं अगेन आपको बोलूं 4 + 5, आप दूसरी बार भी लोगे 9, फिर तीसरी बार भी बोलूं मैं 4 + 5, तो आप कहोगे यार क्या सेम आंसर है, सेम कैलकुलेशन है, सेम रिजल्ट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तो बार बार वही आंसर मुझसे क्यों पूछा जा रहा है। तो सिमिलरली यहां पे भी एक प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने, ठीक है, कि जब एक पर्टिकुलर लाइन को सिस्टम ऑलरेडी चेक कर चुका है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट भी करके एग्जीक्यूट करवा चुका है, फिर उसी सेम लाइन को दोबारा चेक करना, ठीक है, क्योंकि कोड तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है ना, तो यहां पे हमें सिस्टम का टाइम बचाना चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास कोई ऐसा तरीका आ जाए, कोई ऐसा वे आ जाए जिसमें मैं कोड को एक बार लिखूं, यानी कि जो भी मेरा कोड है उस कोड को मैं वंस राइट करूं, ठीक है, और साथ साथ ये बता दूं कि इस कोड को कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलाना है, ठीक है, यानी कि कोड को मैंने एक बार लिखा और बस ये बता दिया है कि इस कोड को भैया 5 बार चलाओ, 10 बार चलाओ, 40 बार चलाओ, सिस्टम अपने आप ही उस कोड को चलाता रहे। अगर कोई ऐसा तरीका मेरे पास आ जाएगा तो काम बढ़िया हो जाएगा। अब खुद देखो कोड मैंने कितनी बार लिखने के लिए बात कही है, मैंने ये बोला है कि यू हैव टू राइट द कोड ओनली वंस, ठीक है, सो यू आर नॉट गोइंग टू राइट द कोड मल्टीपल टाइम्स, यू आर गोइंग टू राइट द कोड ओनली वंस, बट while writing the code you have to specify that okay this code must be repeated 5 times or 10 times as per the requirement. So if this concept is implemented then it is very beneficial for me, because in this case I don't have to write the code or copy paste the code multiple times. Similarly, if the code is written only once, then the interpreter will check the statement only once, okay, convert the statement to machine code only once, right? So in this way the problem from my side as well as the Python interpreter side both are solved. So for implementing this concept, this task, we have a concept named as loops, okay. So today we are going to understand about the concept of loops, right? So now what will be the definition of the loop? Okay, so loops क्या हो गए हमारे पास? So loops are used to repeat particular set of statements. So जैसे आपने देखा भी है already that with the help of the loops we are repeating a particular set of statements, ठीक है। So loop का मदद से हम लोग particular set of statements को बार बार repeat करवा सकते हैं more than once, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये आप तभी करेंगे जब आपको वो set of statements को लगातार करना है, ठीक है। अब जैसे हम वहां पे ऑड इवन वाला काम कर रहे थे वो लगातार कर रहे थे ना, सो उस ऑड इवन वाले काम को हम लगातार कर रहे थे, तो इस तरह के केसेस को जहां पे हम को सेम टाइप ऑफ वर्क को एक से ज्यादा बार परफॉर्म करना है लेकिन लगातार करना है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज द लूप्स, ओके। और हमारे पास जो लूप्स हैं दे आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, द फर्स्ट वन इज द फॉर लूप एंड द सेकंड वन इज द व्हाइल लूप, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टडी कि भाई फॉर लूप को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, और उसको लिखने का व्हाट विल बी द सिंटेक्स, राइट। सो आज की क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया कि रिक्वायरमेंट लूप्स की हमें क्यों पड़ी, बिकॉज जब हमें सेम टाइप ऑफ वर्क को एक से ज्यादा बार करना होगा तो या तो हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते थे, बट कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम क्या थी, एक तो हमें मल्टीपल टाइम्स उसको पेस्ट करना पड़ता। सिमिलरली जब पाइथन का इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट करता तो उसको सेम स्टेटमेंट्स को बार बार सिंटेक्स वाइज चेक करना पड़ता, बार बार मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता और एग्जीक्यूट करना पड़ता, ठीक है। तो एज वेल एज हमारा टाइम भी खराब हो रहा था और एज वेल एज सिस्टम का टाइम भी खराब हो रहा था और नंबर ऑफ लाइंस भी हमारी बढ़ रही थी। सो लूप्स नाम का जो कंसेप्ट आया उसने हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि यस आपको पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट को जस्ट एक बार लिखना है, ठीक है, और लूप के द्वारा हम ये मेंशन कर देंगे कि इस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कितनी बार सिस्टम ने परफॉर्म करना, रिपीट करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।